Battleground Delhi heats up. Aam Aadmi Party versus BJP explodes over voter list. इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वाले। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों। उनके एफिडेविट में तो कह रही कि मैं यहाँ की वोटर नहीं हूँ, तो जो यहाँ का वोटर ही नहीं है कह रहा है, उसका वोट कटने की बात कहाँ से आई? It is raining freebies in Delhi. पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। BJP calls Aam Aadmi freebies fraud. War over Rohingyas peaks. हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहां किस रोहिंग्या को बसाया, वहां उसको कर लो गिरफ्तार। ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है, सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं। आज तक कहीं भी किसी भी रोहिंग्या को कोई भी फ्लैट नहीं दिया गया है। जो लोग झूठे नारे लगा रहे हैं वो भी ये बात जानते हैं। रोहिंग्या किसका वोटर हो सकता है ये पूरा देश जानता है। Delhi Dangal. That is our top focus on 6 p.m. Prime. So let's begin then. Ahead of Delhi elections, there's a full-on Delhi ka dangal, a showdown specifically between the Aam Aadmi Party and the BJP. It's a high-stake election for these parties. Now, what has happened in the latest is Aam Aadmi Party's MP Sanjay Singh claimed that his wife's name was removed from the voters' list. BJP came to hit back, saying, but the affidavit available in public domain says that she's not even a voter of Delhi. And then Aam Aadmi Party again did a press conference to say that BJP is lying. What's happening? What's this political flashpoint of the voter list controversy? Here's a special report on that first. The Delhi dangal heats up ahead of assembly elections. The latest flashpoint, Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh's allegation that the BJP is trying to get his wife's name deleted from the voters list in the New Delhi Assembly constituency. एक बार नहीं दी, दो बार दे दी। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों। नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों। The BJP on Monday rejected the charge claiming that the Aam Aadmi Party MP's wife was enrolled in another state. Sanjay Singh, on the other hand, threatened to file defamation cases against BJP leaders who targeted his family. ये उनकी पत्नी की फोटो है, ये उनका एफिडेविट है जो राज्यसभा चुनाव में दिया गया है। इसमें वो लिखती हैं एफिडेविट में कि माई नेम इज इनरोल्ड इन 188 सुल्तानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश। जब आपका दूसरे स्टेट में नाम है तो आप यहाँ की वोटर हो ही नहीं सकते। मई के अंदर इसी वोटर लिस्ट के आधार पे मई में लोकसभा के चुनाव में मेरी पत्नी ने वोट दिया है। CPW सर्विस सेंटर नई दिल्ली विधानसभा में वोट दिया है। अभी लोकसभा के चुनाव में 6 महीने पहले। इतनी भी अकल नहीं, इतनी बुद्धि नहीं लगाते। The face-off over Delhi voter list has been going on for weeks now. Earlier, the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal had alleged that the BJP is manipulating the voters list by deleting and adding names. The Election Commission denied the charge and clarified the final voter list will be released on the 6th of January. AAP is trying to turn the tables back on the BJP, saying that it is the Purvanchali vote bank whose names are being cut from the voter list in the national capital, and that they will not tolerate this. Interestingly, the entire controversy over Anita Singh's voter deletion application to delete name from voter list has now is likely to get transformed
into a legal battle between Sanjay Singh and the BJP leaders. With video journalist Pawan Kumar, Zamit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi. So here's what you need to know. What are the three big flashpoints between specifically Aam Aadmi Party and BJP, even though it's a triangular contest of AAP, BJP, Congress? Let's begin first. Now, the biggest right now is the freebie. One after another, announcements being made by former Chief Minister, who's now Aam Aadmi Party convener also. AAP announcing welfare schemes. The Mahila Samman Yojana for the elderly, and in the latest for the pujaris and granthis of temples and gurdwaras to get 18,000 rupees per month. This, remember, is while the BJP is saying that these are fraud schemes. This cannot happen, and this is just manipulating the vulnerable voters, especially women, elderly, or those who are associated with these religious spiritual organizations. Demanding an investigation of the Mahila Samman Yojana. Where are you getting all this money from, and how is Aam Aadmi Party making the announcement when the cabinet of the government hasn't made any approval or clearance of the same? Flashpoint number 2. War over voter list. Sanjay Singh, for example, the member of parliament, said his wife's name is removed from the list. BJP then shares an affidavit of the wife, Anita Singh, saying, but she has voted as a voter in Sultanpur, Uttar Pradesh. To which Sanjay Singh again returned to say that is a lie. The difference did happen because in Lok Sabha she did manage to vote as a Delhi voter, and he's now going to file a defamation suit against BJP leaders. This was primarily between Sanjay Singh and Amit Malviya, but actually, the voter list issue is escalating. BJP saying minorities are being added by the Delhi government led by Aam Aadmi Party in the voters list. And then flashpoint number 3, the blame game over illegal immigrants, the Rohingyas and the illegal immigrants coming in from Bangladesh. BJP is accusing Aam Aadmi Party of supporting and facilitating Rohingyas, giving them shelter or cards like Aadhaar and voter ID cards. AAP is charging at Hardeep Puri, and he's saying that as a former housing minister, he gave them apartments. So Hardeep Puri has charged back to say this is all false, nothing of that sort has happened, and that it is Arvind Kejriwal who basically shelters them. So as much as it is party who are currently fighting against each other, it's individual leaders doing the same as well. So in case you thought these are the three big issues, I want you to take a look, especially on the latest announcements that have come. On one side, the whole immigration issue, the voter list, and then comes in the freebies as well. What is this freebies? What is this announcement to say? Pujaris of the temples, granthis of the gurdwaras will hereon get 18,000 rupees as salary per month. Why is the BJP opposing it? In this special report. It is raining freebies offers in the national capital ahead of assembly polls. Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal has announced one more scheme, the Pujari Granthi Samman Yojana, to woo the voters in Delhi. इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है. The registration for the scheme will begin on Tuesday. The BJP is gunning for Aam Aadmi Party over its newly announced scheme for priests. The BJP accused Kejriwal of ignoring pujaris and granthis for the past 10 years and waking up ahead of elections. 2022 में ये पटिशन डाली गई. 2023 से लगातार माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली की सरकार को निर्देश दिया गया कि इस पर अपनी नीति बताइए, और हर बार दिल्ली सरकार ने अगली तारीख लेकर इसको टालने की कोशिश की. Kejriwal is on a roll, announcing various SOPs. Aam Aadmi Party's Mahila Samman Yojana promising cash transfer to women and Sanjeevani Yojana promising free treatment for citizens above 60 faced massive backlash from the BJP and the Congress. Aam Aadmi Party and BJP are also locked in war over illegal immigration. सच्चाई ये है कि आज तक कहीं भी किसी भी रोहिंग्या को कोई भी फ्लैट नहीं दिया गया है. जो लोग झूठे नारे लगा रहे हैं वो भी ये बात जानते हैं. मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए. उनके पास सारा डेटा है, कहां कहां उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है. ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं?
With polls just around the corner, freebies and illegal immigration have become top talking points in Delhi. Bureau Report, India Today. So expectedly, the priests of the temples and the granthis of the gurdwaras meeting Arvind Kejriwal now, and possibly would be welcoming this announcement, even though it's been a political showdown. Following the Pujari Granthi Samman Yojana announcement by Arvind Kejriwal, look at that, visuals on his screen. It appears that granthis from different gurdwaras from Delhi and the pandits from the temples with there's Saurabh Bhardwaj, the minister and MLA, and also meeting Arvind Kejriwal, who's not the chief minister now, remember, but he is the Aam Aadmi Party supremo. And this interesting meeting happening, full-on chanting. Let's listen and dip in what's happening there at Arvind Kejriwal's residence. To what GK MLA Saurabh Bhardwaj has to say to India Today about this specific announcement. सर, आज आम आदमी पार्टी ने जो एक तरह से चुनावी मौसम में घोषणाओं की लड़ी लगाई हुई है, उसमें एक और एडिशन हुआ है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। क्या है स्कीम और ठीक चुनावों के पहले ऐसे अनाउंसमेंट्स की? देखिए, हर पार्टी चुनाव से पहले अपने मतदाताओं के बीच में, अपनी जनता के बीच में बताती है कि वो क्या करेगी, तभी तो लोग वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो करेगी, भारतीय जनता पार्टी बताए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री बस योजना है हमारी, भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को पुजारियों को 18,000 रुपए मिल जाए, इसके लिए भी पेट में दर्द है। ग्रंथियों को पैसा मिल जाए, उससे भी उनके पेट में दर्द है। भाई तुम बताओ ना, तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली दोगे। 10 साल क्या करते रहे? गाली देते रहे। आगे क्या करोगे? गाली देते रहेंगे। तो इस बात पे दिल्ली की जनता वोट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी को अपना। All right, so that's what Saurabh Bhardwaj has to say, and let's go across to my colleague Amit Bhardwaj joining me in this bulletin. Amit, you're getting all these reactions from Aam Aadmi Party. Tell me, why is the BJP upset about this specific scheme after the Mahila Samman Yojana? Well, Pooja, if you look at Aam Aadmi Party's trajectory for the assembly elections, in the run-up for the assembly elections, they are making one announcement after other. Mahila Samman Yojana, Sanjeevani Yojana, the announcement for the auto walas, and now this Pujari Granthi Samman Yojana. So, in a way, he has set his announcement memento, at least, so to say. On the other side, the BJP is saying that, look, you are in the government. If you are announcing it ahead of the elections, why did not you apply these schemes, announce these schemes, implement them in the past 10 years? And that could be a criticism for the Aam Aadmi Party government in the national capital. But having said that, every party which is in power or which is trying to come in power do make special, announcements and special policies that they want to, go ahead in the elections with and offer the voters that, look, this is what we have planned. If you elect us in this election, we'll be implementing it after poll. So that's AAP's argument, but BJP is certainly saying that, look, in the past 10 years, these schemes did not come out. All right, very interesting. The BJP is bringing in the whole imams angle that they were getting all these salaries. They suddenly realized that the priests and the granthis exist too. So it's a political showdown. Expect a lot of it in the days to come. Thank you very much, Amit. Let me now bring you the top story from Tamil Nadu. There's the allegation of a sexual assault of a young student at the university campus. And this happened on 23rd December. This has sparked immediate protest across the state. Opposition BJP, AIDMK and also TVK are uniting against the Dravida Munnetra Kazhagam government. NCW has sent a fact-finding team that visited the university as well. What is the latest happening on this? Let's take a look. The investigation in the Anna University student sexual assault case picked up pace. The Madras High Court has constituted an all-women IPS officers special investigation team to probe not just the crime
but also the leak of the FIR in the case that revealed the survivors' details. ஆனா இது வந்துட்டு வெறும் பாஷ் கமிட்டி போல அப்படின்ற பதில் மட்டும் தான் சொல்றேமே தவிர வேற ஏதாவது ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா? நான் விலகலையா? இல்ல நீ பிரதர் நீங்க The MK Stalin government is under fire over its handling of the investigation. The lone suspect arrested by the police in the case, Gyanashekaran, who runs an eatery near the university campus, is allegedly linked to the ruling party. India today confronted Tamil Nadu Education Minister, who assured strict action against those who are guilty in the coming days. இது ஒரு மேஜர் செக்யூரிட்டி லாப்ஸ்ன்றதை ஒத்துக்கிறீங்களா? மேஜர் செக்யூரிட்டி லாப்ஸ் என்பதற்கு நடந்த நேரம் என்பது 8 மணி. சம்பந்தப்பட்ட அந்த நபர் குற்றவாளி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த நபர் குற்றவாளி நபர் அடிக்கடி வந்து போகக்கூடிய பழக்கத்தையும் பெற்றிருக்கிறார். இதை வாயில் காப்பாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள். முழு விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய மனைவி கூட இங்கு பணி நிரந்தரம் இல்லாத பணியில் ஆற்றி கொண்டிருப்பார். வருவார்கள் போவார்கள் என்ற நிலையில்தான் சந்தேகப்பட்டு இவரை உள்ளே வராது என்று சொல்லுகிற சூழல் இல்லாத நிலையில் இருந்திருக்கிறது. Actor turned politician and Tamizhaga Vetri Kazhagam chief Vijay met Governor R.N. Ravi in Chennai and submitted a petition seeking protection for women in public places. State BJP chief Annamalai is on a fast, demanding justice for the Anna University assault survivor. Gyanashekaran, who allegedly has raped this girl, is part of DMK's system and their workers and karyakartas. The reason I could believe that because they always abuse and oppose Sanatan Dharma. They do not know the value of a woman and the value of a Shakti. The principal opposition party in the state, the AIADMK, demanded Stalin's resignation over the issue. If his mobile phone was on the flight mode, how come police could take 20 numbers based on the mobile phone towers and call them the next day of inquiry, where this guy was also present? And while this guy was being inquired in the police station, a DMK office bearer and the lawyer has barged into the station, threatened the police and took him away. Just because we initiated the protest and its peril to the next level, the police were forced to arrest him. The DMK has launched a firefight. Women from the DMK youth wing on Monday held placards stating they were safe in Tamil Nadu. CM MK Stalin has promised strictest action against the accused in the case. Meanwhile, a fact-finding team of the National Commission for Women visited the university on Monday. Fact-finding committee अभी वहीं पे है, यूनिवर्सिटी कैंपस में है. अलग-अलग लोगों को कमेटी मिल रही है. वो जो विक्टिम है उन्हीं के साथ भी मिल रही है, उनके परिवार के साथ. यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाला जो व्यवस्थापन है उनके साथ भी आज उनका मिलना हो रहा है और प्रत्यक्ष रूप में क्या-क्या घटनाएं वहाँ पे घटी है इसकी पूरी जांच पड़ताल आज कमेटी वहाँ पे कर रही है. Opposition parties are coming together and are asking pertinent questions. How can an habitual offender enter such a safe place? What is the condition of women students across the state of Tamil Nadu? How safe are they? These are the questions that are being put forward by the opposition parties as they are protesting against the state of law and order in the state of Tamil Nadu. Videsh, Pramod Madhav, for India Today. So what is this reference to what appears to be glaring lapses and not enough being done by the government right now? Here's what our research shows. Now that there is no POSH committee in the Anna University, this is important, specifically for females who feel that they have been sexually harassed. They must have at least a committee with set panels who they can approach to with their grievances. A non-functioning security cameras. This was absolutely horrible to know that there were no CCTV cameras that could have provided evidence and footage on the same. No identity verification for visitors. How can a man who has no business being inside the university premises after 8 p.m. can manage to enter, has the audacity to allegedly assault, keep a woman hostage and then blackmail her even? Also, a repeat offender with a criminal record was allowed to the university. And this means the manner in which he was known around, that it was not the first time that he was coming inside the premises.
the FIR allegedly leaked to the public by the administration. With FIR, we mean the details, the address and more about the victim, and possibly that meant much of a concern to the victim and the family. And therefore, the identity leak, which is not permitted at all, given the protocols and the guidelines, and this has led to a lot of questions, is the administration trying to put up pressure on the victim's family, so possibly she or the family may want to take the complaint back. These are some of the allegations coming in. Now, India Today decided to do what precisely many were not doing, and that was reach out to the minister, ask simple, direct questions about the lapses and what the government intends to do in this very serious case. We're talking about our students who do not feel safe on the campus. இது ஒரு மேஜர் செக்யூரிட்டி லாப்ஸ்ன்றதை ஒத்துக்கிறீங்களா? மேஜர் செக்யூரிட்டி லாப்ஸ் என்பதற்கு நடந்த நேரம் என்பது 8 மணி. சம்பந்தப்பட்ட அந்த நபர், குற்றவாளி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த நபர், குற்றவாளி நபர் அடிக்கடி வந்து போகக்கூடிய பழக்கத்தையும் பெற்றிருக்கிறார். இதை வாயில் காப்பாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள். முழு விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய மனைவி கூட இங்கு பணி நிரந்தரம் இல்லாத பணியில் ஆற்றி கொண்டிருப்பார், வருவார்கள் போவார்கள் என்ற நிலையில்தான் சந்தேகப்பட்டு இவரை உள்ளே வராது என்று சொல்லுகிற சூழல் இல்லாத நிலையில் இருந்திருக்கிறது. யூனிவர்சிட்டியில போஸ்ட் கமிட்டி இல்லையா? இருக்கிறது, அதுக்கான கமிட்டி இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த சம்பவத்திற்கு அப்புறம் இதை விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு கமிட்டி அமைத்திருக்கிறோம். போஸ்ட் கமிட்டி இருக்கிறது. நான் மீண்டும் அதான் சொன்னேன், ஏதேனும் எப்படி ஒரு தகவல் தந்திருந்தால் அல்லது இந்த கமிட்டியினுடைய பார்வைக்கு வந்திருந்தால் கூட சொல்லிவிட்டேன், சக மாணவரோ மாணவியரோ இப்படி ஒரு அச்சுறுத்தல் நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லியிருந்தால் கூட வழியை விசாரித்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு. அது இல்லாத பட்சத்தில் தான் நடந்த துரதிருஷ்டம். அதை தான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன். ஆனால் இனி இது போன்ற தவறுகள், குற்றங்கள் நடக்காது என்பதற்கு முழு உத்தரவாதம். வாரத்திற்கு ஒரு முறை அவருடைய போஸ்ட் கமிட்டியினுடைய நடவடிக்கை என்ன என்பதை கேட்டு அறிவதற்கு எல்லா நிலையிலும் நாங்கள் இன்னைக்கு அதுக்கான வசதியை உருவாக்கி தந்திருக்கிறோம். ஒரு ரிப்பீட்டட் அஃபெண்டருக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில வரதுக்கு ஆக்சஸ் எப்படி கிடைச்சது? இதனால அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மேல, அந்த அபிஷியல்ஸ் மேல என்ன ஆக்ஷன் எடுக்க போறீங்க? ஏன்னா அவர் அடிக்கடி வந்திருக்காரு சொல்றீங்க, மல்டிபிள் வீடியோஸ் வந்திருக்குது. ஆனா இது வந்துட்டு வெறும் பாஸ்ட் கமிட்டிக்கு போல அப்படின்ற பதில் மட்டும் தான் சொல்றேன் தவிர வேற ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா? இல்ல, நான் விலகலையா? இல்ல பிரதர், நீங்க இல்ல பிரதர், நீங்க கேள்வி கேட்பதன் மூலம் வாக்குமூலமான ஒரு செய்தி நீங்க பதிவு செய்யக்கூடாது. நான் இதை விட்டு விலகவில்லை, மீண்டும் சொல்கிறேன். அடிக்கடி வந்து போற செய்தி நான் பதிவு செய்யவில்லை. அவர் எப்படி வந்து போகிறார் என்பதற்கு பழக்கப்பட்ட ரீதியில் வருகிறார் என்பதற்கான செய்தி. ஒரு ரிப்பீட்டட் அஃபெண்டர் நாம தெரிஞ்ச பிறகு எப்படி சார் அவனுக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்குது? ஒரு செய்தியை சொல்லி கேள்வி கேட்கும் பொழுது என் மீது ஒரு கருத்தை சொல்லிவிட்டு கேள்வி பதில். சார், ஆக்சஸ் மட்டும் எப்படி கிடைக்குது? அதான் சொல்ல வரேன் பிரதர். நாங்கள் இந்த போஸ்ட் கமிட்டியை காரணம் காட்டி நழுவவில்லை. தகவல் வந்திருந்தால் நாங்களே விசாரித்திருப்போம். காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுப்பது முழு ஒத்துழைப்பு தருகிறோம். குற்றவாளி கண்டுபிடிப்பதற்கும் தண்டனை பெற்று வருவதற்கும் நாங்கள் முழு முயற்சி எடுக்கிறோம். இந்த நிலையில் இவ்வளவு பெரிய கிரைமுக்கு அப்புறம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆபீசர்ஸ் மேல ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்க போறீங்களா? நிச்சயமாக உண்டு. இன்னும் கூடுதலான பாதுகாப்பையும் நீங்கள் ஒரு 10 தினங்களில் அறியக்கூடிய வகையில் உருவாக்கி தரும். To ensure justice for the family and to ensure this does not happen ever again in the country, specifically in the state of Tamil Nadu. On that note, I'm wrapping up this bulletin and signing off. Thank you very much for watching.